Hello friends, welcome once again. The last video that I put up, जिसका नाम है 30 major and common mistake that must be avoided while writing TAT responses. Fortunately, I got a reasonable feedback in that, and one of the feedback that I got is from a person called Mohit Diwan, and he writes, "Sir, your videos put so much of pressure on us for brainstorming and rethink ourselves. I think that was your goal and you are getting it succeeded. Now my perception is changed. I am not preparing for SSB but to make my life better. Thanks a lot." So that was a comment from Mohit Diwan. Now he mentions a word called perception, and he is right. Perception is आपका दृष्टिकोण. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि लेटर, एक आदमी को लेटर 6 दिख रहा है और दूसरे आदमी को लेटर 9 दिख रहा है. So person 1 is perceiving this as 6 and person 2 as 9. Now the question is, who is right, who is wrong? This is a subjective perception. दृष्टिकोण का फर्क है. एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप भी एसएसबी को जाते हो तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एसएसबी नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू नो टुडे. एंड आप जो जानते हो वो ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हम कोचिंग वाला जो दिखाते हैं, और एक एसएसबी वो भी है जो कि एसएसबी वाले देखते हैं, जैसे कि उनको डीआईपीआर ने दिखाया. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके एसएसबी में तैयारी में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप सिर्फ एसएसबी को एक साइड से देख रहे हो, दूसरे साइड की एसएसबी समझ ही नहीं आ रही. सो आपका जब तक परसेप्शन में क्लैरिटी नहीं होगा तब तक ये प्रेशर की जो बात बोली है मोहित दीवान ने वो बना रहेगा. एंड आप लोगों को पता है एसएसबी में रीजनिंग एबिलिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल OLQ. एंड उसके लिए एक इंग्लिश का कोट है, द बिगिनिंग ऑफ ब्लाइंड फेथ इज़ द एंड ऑफ रीजनिंग. अंधविश्वास करोगे हम कोचिंग वालों के ऊपर तो हम आपको सिर्फ एक साइड दिखाएंगे एसएसबी का. एंड एसएसबी में स्टेज 1 होता है, TAT होता है, WAT होता है, GTO होता है, फिर TEE होता है. एक साइड दिखा के छोड़ देंगे, दूसरा साइड हम दिखाएंगे ही नहीं, बिकॉज इट सर्व्स अ पर्पस. इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले भी बनाया हुआ है. सो एक और वीडियो को मैं बताता हूँ, उसका नाम है परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सेलेक्शन. इस वीडियो को देखना. दिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट आई हैव डन. सो द बिगिनिंग ऑफ ब्लाइंड फेथ इज द एंड ऑफ रीजनिंग. सो अगर आपको रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करना है तो ये ब्लाइंड फेथ को छोड़ना पड़ेगा और अपने तर्क शक्ति को जगाना पड़ेगा, जो कि AFOSOP का अप्रोच है. इसलिए मोहित दीवान का एक कमेंट है, "Sir, your videos put so much of pressure on us for brainstorming and rethink ourselves." Yes, rethink ourselves. Not only you should see the SSB from the tail side, you should also see it from the other side, head. Only then आपको एक पूर्ण उसका अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. आप लोगों ने बचपन में कहानी सुना होगा, 6 blind men and an elephant. 6 अंधे लोग एक एलिफेंट को हाथ लगा के पता करने की कोशिश किया कि एलिफेंट कैसा होता है. तो एलिफेंट वास्तविकता में तो ऐसा होता है, बट ब्लाइंड मैन को ऐसा लगा कि एक को लगा कि वो स्पीयर जैसा है, एक को लगा फैन है, एक को लगा बॉल है, एक को लगा रोप जैसा होता है, एक को लगा ट्री का ट्रंक है, और एक को लगा इट इज़ लाइक ए स्नेक. But we all know that elephant is none of them. The real elephant is completely different as compared to what the 6 blind men perceived because of their limited understanding of elephant. So उसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो असली एलिफेंट अगर राइट में है तो perceived elephant लेफ्ट में है. And there is a huge gap between the real elephant and the perceived elephant. In the same way, when you go to the SSB, you only know one side of the SSB. Let's call it the tail side. What about the head side? Unless you get a complete picture, you will never understand. इसीलिए मोहित दीवान ने ये बोला है कि आपके वीडियो देखने बहुत प्रेशर आता है, बिकॉज मैं आपको SSB कोचिंग वालों की नज़र से नहीं दिखा रहा. इवन दो आई माई सेल्फ ए कोचिंग वाला, आई एम शोइंग इट फ्रॉम द साइड एज ऑब्जर्व्ड और एज अंडरस्टूड बाई द interviewing officer, psychologist and GTO. हमें किसने ट्रेनिंग दिया हुआ? DIPR ने. So you have to understand कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB is as you know about SSB through the social media platform, through the various tips and tricks वाले books,
एंड पीपल लाइक गॉड ऑफ एसएसबी, जिन्होंने एसएसबी को बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से आपको दिखाया हुआ है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि कोर क्वालिटी को भी हाइड कर सकते हो, सुसाइडल टेंडेंसी को भी हाइड कर सकते हो, फियर ऑफ फोबिया को भी हाइड कर सकते हो. नाउ दैट्स व्हाट द कोचिंग पीपल हैज गिवन यू. बट देन देयर इज अ अदर साइड ऑफ द एसएसबी जिसको कि आप नहीं जानते हो, और मैं जब बताने जा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ ब्लाइंड फेथ मेरी बातों को आप सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज मैं एसएसबी को एक एसेसर की नज़र से दिखा रहा हूँ, आपको कोचिंग वाले एक अलग ही नज़रिया दिखा रहे हैं. इस पे क्या ये जो स्लाइड है, इस पे क्या समझ में आ रहा बता रहा हूँ. सो AFOSOP इज ट्राइंग टू शो यू द अदर साइड ऑफ द SSB as perceived, as seen by the psychologist, GTO and interviewing officer. So there is a huge perception gap between what is shown to you by the coaching centers and the YouTube video and what the DIPR has told us how to perceive the SSB and how to interpret your responses. So AFOSOP videos are from the head side, what you know is from the tail side. क्या समझ में आया बताना. एंड जब तक आप इस गैप को बदलोगे नहीं, ब्रिज नहीं करोगे, तब तक there will be always a conflict between what you are trained by these coaching people and what the SSB demand from you. और जब तक ये गैप बना रहेगा, your selection will be less than 3.6. समझ में आया तो मुझे बताना क्या समझ में आया. So candidates' understanding of the SSB is based on the distorted perception that the coaching centers have created, which is based on personality manipulation. Whereas the SSB को जो DIPR ने ट्रेनिंग दिया SSB के SSS को, that is based on organizational requirement, military aptitude. So they have created those 15 qualities that we are looking for. So the coaching, instead of building that, is trying to give you tips and tricks to manipulate that. That's where this perception gap. 6/9, which is correct. You will have to identify and understand how the SSB is from the other side, head. So now that's where this letter comes. This letter is from Director Manas K. Mandal. The para 2, he writes, I appreciate your concept, the Armed Forces Officer Selection Orientation Program, AFOSOP, and assisted introspection. So this is the head side of the SSB. And then this is the letter from Army Headquarters. Para 2A बोलता है, the Armed Forces Officer Selection Orientation Program, AFOSOP, as a counter to the conventional SSB coaching, which is manipulative. God of SSB वाला, core quality hide कर दो, suicidal tendency को छुपा दो, that वाला. AFOSOP is छुपाने की जरूरत नहीं है. Let's identify the gap, let's fill it, and you should come with your desire and the इच्छा शक्ति to do that. This is personality development wala approach, self management leadership wala approach, and that is tips and tricks, core quality hide karo wala. That's popular because that's easy manipulation. So assisted introspection for non-recommended candidate, today it is for everybody. It has become larger than that, and it is today called self management leadership, which is the foundation of personality and leadership development, जिसके ऊपर SSB को build किया जा रहा है. So 70% training is on building your personality, and 25 is to put you through the testing tools. That's the approach. So this is a letter from Principal Sainik School Chittorgarh, जिसका para 2 में लिखा है, clearing the written entrance examination is relatively easy for our cadets, but very few qualify the SSB primarily for lack of proper orientation. This is in spite of training at various private coaching academies that tend to do more harm than good. Suicidal tendency को छुपा दो, dead body का ड्रामा बनाओ. This is meaningless manipulation. So this only confuses, and that's what it says. In spite of training at various private coaching academies, God of SSB. So I hope Mohit आपको answer मिल गया होगा. Sir, your videos put so much of pressure on us for brainstorming and rethink ourselves. I think that was a goal. That has been my goal even when I was a serving GTO. That's where the entire project of perception management of candidates for improved selection came. But unfortunately, I told you the blind faith is the beginning of end of rational thinking. जब तक वो blind faith को छोड़ के थोड़ा सा ये नहीं देखोगे कि head side से SSB कैसा दिखता है, I will not be able to achieve my aim. And I'm okay with that. मैं तो यही करूँगा because I believe in this process.
सो आपने देखा होगा कि एसएसबी की तैयारी में रीएश्योरिंग लाइज पे भीड़ ज़्यादा होती है। गॉड ऑफ एसएसबी के पास भीड़ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गॉड सुसाइडल टेंडेंसी वालों को भी ऑफिसर बनाने की बात करता है। और बिटर ट्रुथ में मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ यू हैव suicidal tendency, forget about getting selected from SSB. You should not go for SSB. You should first correct it. So if you have fear of phobia, you should correct it. If you have lack of communication skill, you should correct it. If you have poor social adaptability, God says hide it. I'll say improve it. It can be done. So इसलिए आपने देखा होगा इस पिक्चर में नकली हाथी पे भीड़ ज़्यादा है टिप्स एंड ट्रिक्स पे, लेकिन असली हाथी के खरीदार बड़े कम है। सो पर्सनालिटी असेसमेंट एसएसबी करेगा। कोचिंग वाले को काम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन आज पॉपुलर है गॉड जैसे लोग जो बोलते हैं कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। ये डिफरेंस आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मोहित दीवान, तो ये समझ में नहीं आएगा एफोसोपी वीडियो देखने में प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ये कड़वा सच है। आईना दिखाता है। क्या आईना दिखाना गलत है? तो मैं गलत हूँ। मैं नहीं बोलता कि कोर क्वालिटी को हाइड करके कोई ऑफिसर बनना चाहिए, या हम ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं। सो देर इज़ अ डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। सो अगर आप में दम है, अगर आप में दम है असली हाथी देखने का, हेड साइड से एसएसबी को देखने का, कि आपके बिहेवियर को एसएसएस कैसे देखता है। आपको पिछला वीडियो दिखाएगा द 30 मेजर एंड कॉमन रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस इन टीएटी वाले में। यू विल रियलाइज जब तक इसको करेक्ट नहीं करोगे, हाउ विल यू गेट रिकमेंडेड। सो अगर आपको असली हाथी देखने का दम है तो 2 वीक्स का AFOSOP कॉम्पोजिट बैच, कॉम्पोजिट मतलब SML प्लस SSB का, is going to start at Nagpur from 12th June 2023 onwards. जुलाई का बैच 10th जुलाई से। सो 12th जून / 10th जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के बैचेस चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप at 9511266172 या 9090099035 पे you can WhatsApp us, give us a call, we'll give you the details. And if you wish to register, the link is also given in the description box below. So if you click it, it will take you to the registration page and you can click there and fill the details and get your seat registered. There are only 10 seats left now. Rest all are full. We have limited seats. You can also make the payment using this QR code. This is the QR code. You can pay ₹4,000, which is the registration fees, and get your seat registered. जब आप इसको स्कैन करोगे, Academy for Life Skills Development नाम से आएगा, that's the name of the institute, and उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन TID नंबर भी आ जाएगा 28036923, and you can make the payment. And once you make the payment, you can share the screenshot at 9511266172 and your registration will be confirmed. So 12th June is the first batch that is available. इसके अलावा there is one more method to pay, that is using Google Pay. You can Google Pay to me at 8275577650. Google Pay करके इसका screenshot को you can send it at 9511266172 and give them your name, place you're coming from, and the date of your arrival, and we will get back to you. Now the classes will be conducted at AFOSOP SAHAS the camp, which is at Nagpur. We have shifted from Pune to Nagpur because of infrastructure availability and various other facilities that are available. This is a 38-acre land in which we have taken this. Now the link to this institute address is also given in the description box. SAHAS Google link करके लिखा होगा AFOSOP SAHAS. Click that and it will show you the link or the location where you have to come. Now this is the institute, Academy for Life Skills Development, where the AFOSOP classes will be held. The bottom floor, जो ground floor है, that is the hostel area. Top में जो middle का portion है, that's a classroom, and both the flanks are again hostel accommodation. So 150 plus candidates can be accommodated for various, but we have got limited seat this time, so you can plan to join. Now this is the institute का एक छोटा सा video. So this is the front of the institute का ये,
Now on that side where the car is seen, that is the cook house, and वो जो white दिख रहे हैं, that's the sitting area for dining area. This is the open, ये जो area दिख रहा है, this is the open classroom. उसके पीछे can see the lake. These are academic faculties, and a beautiful place. 38 acres of fully developed adventure camp where we intend conducting these AFOSOP classes. So there will be a classic place to have a retreat from the hustle bustle of the city life, so you're most welcome to come. This will be a 2 weeks fully residential program. Separate hostel for boys and girls are available, and excellent vegetarian food will be served to you, and we have both indoor dining facility and outdoor. You can sit out or sit in, and you can have the excellent food with us. We'll be there. Uske alawa, since the SAHAS camp is about 40 kilometers away from the Nagpur railway station, so pick and drop facility will be available from the Nagpur railway station to the SAHAS camp where the AFOSOP classes will be conducted. And to avail this facility, you have to be at the Nagpur railway station at 5:30 p.m. on Sunday, that is one day prior to the commencement of the class. For example, 12 June को है तो 11th June को 5:30 you should be at the railway station, and for any assistance you can call at 9511266172 and we'll do the needful. Now these are the training classrooms. This is classroom number 1. These are the new classrooms, and this is the classroom number 2. Still it is in the process of development. And this is an online training session going for our NDA Vision 60. आप लोगों को पता है there is this 2 years training program after 10th, 11th and 12th, and we conduct this 11th and 12th का Vision 60 program. So इसका admission अभी का जो already almost खत्म हो गया है. In case if somebody is interested, you can call us at 9511266172, and still you can take admission for 11th. Both residential and day scholar facilities available, 2 different campus. One is in the SAHAS campus itself. So for more details on this, you can watch this video. AFOSOP के YouTube में जाना and type National Defense Academy NDA Vision NDA. This is by me, and the institute का name is Chhatrapati Shivaji Maharaj Armed Forces Preparatory Institute, Nagpur. So in case any one of you is still interested in admission for this, that is 11th 12th science के लिए, तो you can contact at 9511266172, and I am interacting with them year long, मतलब 2 साल completely self management leadership and written का SSB JE का and leadership and personality development over a period of 2 years. So you're most welcome to join us in case you are interested, and if few seats are still left, you can, if somebody is interested, जो 11th 12th में you can contact and find out the details. Now these are some of the outdoor training session in progress. आपने वो वीडियो में देखा होगा this place. So English communication skill, public speaking का practice regular, and content building, that is geopolitics, current affairs, international relationship, India specific news, must know stuff, defense related knowledge, and all those stuff will be both content building भी होगा, content delivery के ऊपर होगा, so that you develop adequate confidence, and you can conduct yourself much more confident manner. So especially people with poor language skills, poor English communication skill, join immediately so that you benefit this. And क्योंकि we are going to be there 24 hours with you, so हमारा भी availability आपके साथ 24 hours होगा. So most welcome. This is another outdoor session in progress. Now, इसके अलावा adventure activities. So far in the AFOSOP, we were not taking too much of a interest in the physical dimension of it, because we assume कि आप physical fitness हो ही हो. तो यहाँ पे all those facilities of SSB में जो requirement training infrastructure वो तो होगा ही होगा. Since 38 acres of fully developed adventure camp, so these are the actual SAHAS camp का क्या बोलते हैं सीन है. So rappelling, wall climbing, river rafting, night navigation, obstacle course, है ना, जैसे आपका GR and all होता है उस तरह के और भी बहुत सारे हैं. So a lot of activity, lot of team building activities. So most welcome to enjoy it. This is a celebration of 26 January का celebration था SAHAS campus में. So with our staff. So once again, to register 9511266172 and 9090099035, and other methods of registering I've already given you. So hope to see you on 12th June 2023,
एंड दिस विल बी ट्रमेंडस लर्निंग एक्सपीरियंस. ऑलरेडी आपने AFOSOP वीडियो से देखा होगा कि ये कोई मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग नहीं है. Absolutely development of the self, and whole lot of things that can be corrected will be corrected, and even if it is not corrected you will know where to work. Absolutely एक भी वर्ड रट्टा नहीं मारा जाएगा, समझ के साथ किया जाएगा, बुद्धि के साथ किया जाएगा. ताकि मोहित ने जो कमेंट लिखा है कि AFOSOP वीडियो देखने से प्रेशर आता है, वो इसलिए आता है बिकॉज AFOSOP एम्प्लॉयज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टूल्स, नॉट पर्सनालिटी मैनिपुलेशन. नो टिप्स एंड ट्रिक्स, एब्सोल्युटली रोथलेस फौजी ट्रेनिंग. अगर आप लोग विलिंग हो तो प्लीज रजिस्टर फॉर द सेम एट द गिवन नंबर्स. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.